welcome all of you today with our esteemed panel. So, I welcome the panel today who is bringing a change in everybody's life, physically and mentally too. Especially in this time when everybody is dependent on something or the other, and we are being very lethargic and lazy to walk. Whenever we want to go to the nearby market, we generally prefer going by car instead of walking. So एक एक्टिव और एक फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ से डिक्लाइन होती चली जा रही है. The panel today that we have with us is an inspiration for everyone, not just by physical activities but also also for the mental health. So this is giving a better social life to us as well. I welcome Manoj Bhartwal sir today. He is a sports person and he is into golf, tennis, badminton, cricket. I welcome Nixon Joseph sir with us today. He has completed 42 kilometers marathon 42 times, full marathon, and I think that's amazing. I welcome Mr. Devendra Kumar Gupta. So as we all know, he is from the social background. He's been working from past 17 years in bringing change of life of slum dwellers who are into drug addicts. So I welcome all of you here, and I welcome my co-host Arpan, and I think we're good to go. Hi, good evening, everyone. Welcome to another power-packed session regarding sports and youth. And as Tanya rightly said, we've got three wonderful panelists. I would just like to give a 30-second introduction how Catford has impacted sports in India. We started out actually as a training entity about 4 years back, wherein we brought something which was very unique, which had never been tried in India, especially in the sporting sector, which is military application and special forces tactics for sports. We have seen, be it the Black Cat Commandos from the NSG or the Special Forces, they are a class apart from the rest. And the reason is the mental toughness as well as the physical fitness. So that those training manuals we try to incorporate, and with the help of that, we've currently trained cricketers at the national and international level, Khelo India gold winners, national shooters, people training for the Olympics. So that is Catford's background. But today, my first question is for Nixon, sir. When I heard that he's a marathon athlete, but then to hear that he's completed 42 marathons was something very exciting for me. And so, Nixon, sir, my first question is also to you. Tell us a little about the experience of running 42 marathons, your own personal experience, and what is your message to the youth through that? Thank you, Arpan. Good evening to all panelists. Good evening, sir. Till the age of 45, I was not into any fitness activities. I was focused fully on studies and office work and all. Also, from my school days, we were brought up with a lesson that we should focus only on studies. If only those who are backward in studies only go for sports. So it was in that way we were brought up, and we were told that if you study well, you can grow up, to be you will get a very good job, like that it was. So I was believing in that, and I thought it was nice. When I grow up, I'll get a very good job. So I was focusing on studies, and I joined SBI in 1985 as probation officer. And then till the age of 45, everything was going on fine. I felt career also going very well. But I go to office at 9 a.m., return at 9 p.m. It was going on fine. Then I was thinking, I felt some vacuum. I felt that life is getting into a stagnation. I felt that I'm in a comfortable zone. And as long as we are in a comfortable zone, we don't grow at all. And we don't feel excited if we are in a comfortable zone because we get used to it. So I decided I should change this. I should plunge into an uncomfortable area. So I was thinking what to do. And then I thought that I will do long distance running. Because at that time, I thought SBI is having 270,000 officials. No one was doing long distance running.
So I thought this is an opportunity. I will do something like long distance running, and then I'll be different. And if you are different, you inspire others. So I thought I will do something different and inspire others. So I registered for the Standard Chartered Mumbai Marathon in 2005. Not knowing much about marathon, I had practiced, okay, somewhat, but not to the extent required. So I didn't run 5-10 kilometers and all earlier. Just I thought I will do 42 because whatever I do, it should be really impressive. And I also thought if I can take a 5-kilometer challenge, why not take 42 kilometers challenge? Because that is something huge. It is a very respectable distance. So I thought I will register for the 42 kilometers marathon. And on the day of the marathon, I started running. I reached around 10 kilometers. Then I found my body aching like anything, fully dehydrated, joints all paining, blisters. I was thinking whether I should proceed or surrender. Great. Then when I was thinking whether to surrender or not, at that time I thought, if I am surrendering, I am not going to be different. If I am surrendering now, I am not going to inspire others. So somehow I have to continue and complete 42 kilometers. So with lot of pain, lot of exhaustion, I completed my first full marathon, taking 7 hours, 30 minutes, and completed and got my first sports-related medal in my life. Amazing. Wonderful to hear amazing, that, sir. sir. It gave me a Yeah. message that if you are determined, you can achieve anything in life. And that is my message to all the youth who are listening today. There is nothing impossible. If we are determined, we can achieve whatever we are having in mind. So, this reminds me of a saying, no pain, no gain. So Yes. you took a lot of pain, you worked on yourself, and you've gained something. That's amazing. My next question is for you, Mr. Devendra. I want to know, as you've been working from past 17 years and you helped a lot of kids to get de-addicted to drugs because of sports. How do you do it? What is your motivation, and how can be sports a good medium for de-addiction? And I would say not just for drugs, for anything else. किसी को फोन का एडिक्शन है, किसी को किसी और चीज का, तो how can sports can divert them? थैंक यू तानिया। स्पोर्ट्स का जो इम्पैक्ट है उसने तो शायद मेरी जिंदगी ही बदल दी। अगर स्पोर्ट्स नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। बहुत शॉर्ट में ही मैं बताना चाहूँगा। इन दिल्ली एट द एज ऑफ 8 आई स्टार्टेड सेलिंग बैलून्स इन दिल्ली ओनली। तो 8 साल की उम्र में मैं दिल्ली में ही गुब्बारे बेचा करता था। तो एक बार जो ड्रग एडिक्टेड जो लड़के होते हैं उन लोगों ने मुझसे पैसे छीनने के लिए मुझे पीट दिया और बुरी तरीके से मुझे मारा, बहुत गिरा गिरा के मारा, क्योंकि उनको नशा करना था तो उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने पैसे छीनने के लिए मुझे पीटा। तो धीरे धीरे लाइफ मेरी आगे बढ़ती गई। चलो वो एक अलग चीज थी, तो मैं भी उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत खेला करता था। अब बीइंग आई बोर्न इन अंडर प्रिविलेज फैमिली, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी एकेडमी में जाऊं या स्कूल्स में हमें स्पोर्ट्स मिलता था। हम वहीं छोटे मोटे पार्क में जो भी गेम्स हुआ करते थे वो खेला करते थे। उसमें एक बेसिक मेन गेम था कबड्डी का और खो खो का। तो ये जो गेम थे ये हमें मिला करते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने कबड्डी में इंटेंसिव ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, मतलब ज्यादा खेलना शुरू कर दिया। तो क्योंकि मैं अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में स्लम में रहा करता था, तो वहां पर मेरे साथ के जितने भी लड़के थे वो मोस्टली नशा करने वाले बच्चे थे। तो हमने अपने ग्रुप को इंक्रीज करना शुरू किया। हम 10 लड़के खेलते थे, 10 से 15 लड़के हुए, 20 लड़के हुए, 25 लड़के हुए। तो हमने देखा कि अधिकतर लड़के जो नशा करते थे वो कबड्डी की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन करने की वजह से उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट डाइवर्ट हो गया था कि वो नशे से दूर हो गए थे। तो ये चीज जो थी वो उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छी लगने लगी। अच्छा, मैं इनिशिएटिव लिया करता था कि कबड्डी खेलने चलना है, कबड्डी खेलने चलना। तो ऐसे जो पेरेंट्स हुआ करते थे जो अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि तुझे खेलने नहीं जाना है या इनके साथ नहीं घूमना है, वहां पेरेंट्स अप्रिशिएट करने लग गए थे कि नहीं तुझे खेलने जाना है तो देवेंद्र के साथ खेलने जाना है, खेलने जाना है तो कबड्डी खेलने जाना है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लगता था कि मेरा बच्चा अगर कबड्डी खेलेगा तो कम से कम नशे से तो दूर रहेगा। तो हम इवनिंग आवर्स में, जो कि आज भी क्राइम के जो डार्क आवर्स जिनको कहा जाता है, उनमें बच्चे जो है वो फ्लूइड का नशा करते हैं, दवाइयों का नशा करते हैं, आयोडेक्स खाने का नशा करते हैं। तो इस तरीके के जो नशे जो आज भी स्लम्स में अवेलेबल हैं
उस नशे से हमने दूर करने का कोई प्लान वे में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनता चला गया। तो स्पोर्ट्स का जो माध्यम है वो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में 3 बहुत बड़ी चीजें लाता है। एक, मोटिवेशन, जो कि हमारा एक जोश प्रोजेक्ट है, यू नो वेरी वेल। मोटिवेशन, वो उसको मोटिवेट करता है, किसी भी एक ऐसी चीज में पैशन क्रिएट करता है कि जहां पर वो अपनी लगन से लगता है। दूसरा, वो उसको डाइवर्ट करता है ऐसी चीजों से जो बुरी हैं, जैसे सब्सटेंस अब्यूज हो गया और जो दूसरे नशे हो गए, उनसे उसको डाइवर्ट करता है। तीसरा, उसको इन्वॉल्व करता है। इन्वॉल्व करता है किस चीज में? एक ऐसी स्पिरिट में जहां पर की डिसिप्लिन है। क्योंकि आप किसी भी स्पोर्ट्स में जब जाते हैं तो वहां पर टीम बिल्डिंग होती है, वहां पर टीम होती है, वहां पर डिसिप्लिन होता है। तो स्पोर्ट्स का जो रोल है वो यूथ को लेकर के, कि जब हम 12 साल की उम्र से ऐसे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं जो कि यंग हैं, और क्योंकि मैं तो एक प्रिविलेज सोसाइटी के बारे में नहीं बात करना चाहूंगा कि जो बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मैं तो बात करना चाहूंगा स्लम में नुक्कड़ पे जो बच्चे खड़े होते हैं 12-13 साल के और नशा करते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं, और उन लोगों को जब आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंज आते हैं। उनकी ओरिएंटेशन होती है टुवर्ड्स, दे ट्राई टू कन्वर्ट देमसेल्फ towards their career, towards their family, towards everything. So these are my scenario that what I have observed कि sports जो है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में समाज को भी बदलता है, उसके परिवार को भी बदलता है और उसके करियर को भी बदलता है। Great, amazing. Devendra ji, that was quite a story. Wonderful to hear it. And at CatFit, I would like to say, I mean, once this pandemic and all is over, or at least it subsides, we would definitely and certainly, try and help you out there as far as sports are concerned, because we have the requisite expertise to, reach out and probably be a part and support you in your endeavor. Wonderful to hear that story, sir. Coming to Manoj ji. Manoj ji, you've been in senior management positions for a considerable period of time. So what is your, sir, experience with employees who play sports and the ones who do not play sports? What is the difference that you have seen in the two? That's a very, very good question. First, I'll talk about myself. Tanya said that I play golf and tennis. I used to play tennis and things like that. During school days, we played all kinds of sports. I was living in the hills, so we would run up and play cricket and then football, and then we would also play gulli danda and gitti pod and things like that. जो 7 गुट्टियां रख के उसको मारते थे गेंद तड़ी kind of a thing. So those are the kind but of you, things. sir, do have a sports person's personality, I must say. So, but later, the focus was on studies, that until you put in good amount of labor in studies, you're not going to get a good job and things like that. But I was a regular walker for about an hour or so. I used to do yoga for, quite some time. But after joining ONGC, and especially later on, I was handling the corporate sports department also, and that's where I came in contact with a lot of sports persons. Ishan Sharma was a cricketer, then Sehwag, he was an employee of ONGC. I could never talk to who's Anushka's husband, Virat Kohli. I'm not too much into cricket. I'm into golf and Virat Kohli, but he's also an ONGC employee, and I used to fill up his ACR and things like that. But the most challenging thing I did was that I was given the responsibility, along with my then director and another colleague who was head of sports, to put people on top of Mount Everest, and that's quite an experience. So later on, ONGC in 2017 became the first corporate in the world to put 6 people on top of Mount Everest, and these people also rendered national anthem on top of Everest and got Limca Book of Records. Next year, we put about 10 people in one go on top of Mount Kanchenjunga, which has been climbed only 29 by only 29 people till date. But in 2018, 10 people in one go from ONGC climbed, on top of Mount Kanchenjunga. Anyway, and I believe it's more difficult than Everest, the climb that is for Kanchenjunga. Very, very difficult, because, as I said, Everest has been climbed by hundreds of people, but Kanchenjunga by only 29 people. Because behind one, I remember the video that you sent me, sir. It was amazing. Like, if I'll get a chance, I'll share it with you. And it's so inspiring the way these guys are doing it. Yeah. Like, hats off. For Everest, there is already a prefixed rope, and we put one Sherpa behind one mountaineer. But in Kanchenjunga, you have to give 3 Sherpas behind one person, and you have to fix a rope afresh, because not many people go there. Anyway,
the takeaway from especially team sports is, as opposed to the individual sports like tennis or chess and whatever, especially in team sports, there is a Sanskrit shlok again, because I'm a Sanskrit scholar. I like to quote. It says, "Sangachhadvam samvaddadvam samvo manansi janatam देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते संगच्छध्वम हम साथ में चलें संवदध्वम साथ में बोलें सम वो मनांसी जानता एक साथ दूसरे के मन को जाने। जैसे पूर्व पहले देव जो देवता लोग थे वो एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए देवता कहे जाते थे वगैरह वगैरह, लेकिन सम वो मनांसी जानता एक दूसरे के मन को जाने। अब आप सोचो कि फुटबॉल जैसे गेम में जब यहाँ पर फुटबॉल पे आप कॉम्पीट कर रहे हो, किसको पास देना है, किसको फॉरवर्ड पे खेलना है, किसको, आपको अपने ओपोनेंट के दिमाग को भी समझना है और अपने टीम के खिलाड़ियों के दिमाग को भी समझना है। तो जब आप एक मन से किसी काम को करते हैं तभी आपको अपने लक्ष्य की उपलब्धि होती है। दिस इज द ग्रेटेस्ट टेक अवे ऑफ स्पोर्ट्स, which happens in the army operations also, which happens in any team game, which happens in say oil exploration. So sports has a great takeaway in the sense that when you are concentrated on especially team events or team spirit, everybody has to put all the best efforts together, and that's how you develop a synergistic approach in any achievement any of the projects. So that's a great takeaway as far as sports are concerned. Individual sports, what when is you your are yourselves and it's a different ball game. Right. So what is your experience with employees who do not play sports? I mean, which are the areas psychologically or physically that they lag? And probably you could tell people a lot of people, as Nixon sir and you rightly said, that initially the whole emphasis was on study and study. But now that you have a lot of people study and they reach the corporate sector, what is the drawback that you have seen in employees who do not play any sports? What is the physical, psychological and mental roadblocks that they face in real life? I've always been an advocate of sweating it out at least for 1 hour every day. It's like putting your money in a bank account. Until you put something in your bank account, you cannot withdraw from it. So it's a credit debit kind of an operation. And Mr. Nixon will understand it. I mean, you when you are ill or when you are feeling low, your body energy will delve into the reserves and take out your reserves and then put you back on track. So sweating it out for 1 hour also releases a lot of scientifically, I don't know, endorphins or endocrine gland secretes enzymes which make you feel good, you feel proper, you feel full of energy. So that's very, very important. Some other activities like singing and fine arts also give you a feeling of well-being, but as opposed to sports, they are not physically active things, And I put a lot of emphasis on physical activities, at least for 1 hour. If you sweat it out, your pores are clean, your body is fit, and you can take on a lot of more challenge. And this is what happens when, as opposed to people who are into some kind of sports and those who are not into sports, I have found that those who are not into sports, physical sports, tend to, I'm generalizing, I may be wrong also, but I feel that they tend to feel sometimes depressed or get into negative mold and do not have the physical or mental agility and strength to come out of their depressive state of mind. It's a very generalized statement, but as opposed to the sports, but I found very, very few sports persons who are depressed. I always found, because whenever they feel something, they'll go on the road and start running, and they'll come out of their. True. I've not seen any sports person in any depressive state ever. I think that's a great takeaway. No, I also agree with Yeah, you. that. And my next question is related to this only from you, Nixon sir. What do you think? How sports affect on mental health of a human being? The sports makes you very, very positive. I will tell from my experience itself. Like I told you, I didn't run or do any fitness activities till the age of 45. Compared to that time in the bank, in my office, and the time afterwards, I have found there has been a sea change. Sports makes you, like, it gives you a lot of confidence. It gives you, improves your self-esteem. It also makes you more resilient.
Therefore, whatever good qualities you are having as a sportsman, you carry these qualities to your work also, because you cannot separate it like that. So in turn, your productivity also increases. Your attitude in office also becomes very positive. So these are the plus points you find if you indulge in sports. And also, these are complementing each other. I feel that when I complete a marathon run, 42 kilometers, like the running 42 kilometers is quite exhausting. But once you achieve that goal of 42 kilometers, it gives you a sense of achievement, which boosts your confidence, which boosts good hormones in your body, which makes you mentally, emotionally very, very high. And then you carry it for quite some time. That's why I almost run 4 full marathons per year, because every 3 months you have a physical and mental challenge before you. And for any human being, if you face a challenge, conquer it, you feel so thrilled, so happy, so excited, and so satisfied. So that feeling is there throughout the year. If you are planning any such activity like that, like I do 4 full marathons per year. Why I do it? Only because of that. I have a challenge every 3 months. So if I achieve that, I get a big high. And that will be carried to your workplace also. Like to the earlier question, those who don't do any sports activities and those who do, I have found there is a huge difference. And sports teach you a lot of things, like team spirit, how to be a very good team player, how to like strategize, how to do it also gives you the message that your excellence in sports also depends on your hard work, and that is also a good message you are getting. So all these good qualities sports is promoting, and I would always tell all the people, everyone should do some kind of sports activities, not necessarily 42 kilometers and all, but whatever is possible, 1 kilometer, 2 kilometers, 3 kilometers, walking, jogging, or running, or swimming, dancing, some kind of physical activity everyone should have. And I always tell that we had earlier focused on illiteracy. Now in India, literacy has improved. Digital literacy also we are improving. What we have to improve now is physical literacy. Because of the modern lifestyle, many of us are vulnerable to a lot of mental stress as well as physical illness also. So we have to see that we are physically literate, and all colleges, schools, education should put a focus on physical literacy. And physical literacy, I don't mean running, participating in sports and getting medals. No, it has nothing to do with medals or winning. It is just keeping your body fit, and we should do at least some basic movements. I can actually relate to what you're saying, sir, that in schools and colleges, पहले बच्चे कितना मतलब I remember during my childhood when I was very young, we used to play a lot, garden में खेलना, badminton and whatnot. But these days, kids are like बस पूरा दिन PUBG and all those games. So I believe कहीं ना कहीं एक bond और एक जो friendly connection build होता है, वो भी बहुत ज़्यादा hamper हो रहा है. That's why I tell the spirit of resilience. The quality of resilience is very less in the present day youth, because they get disappointed very fast. They get disillusioned very fast. But all these can be improved if you are doing some sports activities. Sports promotes resilience in a very big manner, because failures, success, disappointments in sports activities, we take it very coolly, because we know today you lose, tomorrow you win, or tomorrow you win, day after tomorrow you lose. So all these, the spirit of resilience easily comes to sportsmen. Manoj, so my next question is related to this itself to you. What are the developments that you see in corporate employees who play sports? What are the developments when compared to, say, the ones who don't play? What are the developments that you have seen? What are the things that they do differently? I will come to a question, but let me add on to what Mr. Nixon has said first, because it's a very, very important point. In life's journey, you come across many failures. It is up to you how you take those failures rather than the successes, because successes hardly teach you anything, but failures teach you a lot.
And when you lose a game, especially in sports, that's the test of your patience, and that's the test of your grit and willpower, and your personality as to how you're going to come out of that and still be successful later on. So sports, I forgot to mention, is very, very important in the sense that like your successes and failures in life, sports also teaches you to take your successes and failures in your stride and come out of your the failures and still focus on your successes later on. Get yourselves better and better with time, and that's how life is all about, improving yourself over and over again successively. Now if you want to ask me something, I just missed what you wanted to ask me. You wanted to ask me something, Tanya? So, Right, sir, I was when asking, what are the yeah, areas of development? Yes. Right. Go ahead. So I was asking, sir, what are the areas of development you have seen in employees who play sports when compared to the ones who do not play sports? And these are young employees I'm talking about, normally who are under 35 years of age. I will prove my point with just one example. The example is that there is a young officer with us who has put in 10 years of service. His name is Prabhat Gaurav. Prabhat could not run 1 kilometer straight at one go, but he wanted to climb Everest. Now, the first challenge was that we opened it to all the employees of ONGC that first you have to complete 5 kilometers run. Then after this physical endurance, we will narrow down on some number of people, then still narrow it down, then send some people to preliminary mountaineering course and things like that. And Gaurav has admitted that he was a person who wanted to climb the Everest but could not run even 500 meters or 1 kilometer straight. And he is the person now, I will try to get him to speak to you sometime, who climbed Mount Everest. And the sense of elation that you have when you fulfill your dream is phenomenal. It's phenomenal. So I cannot give you a better example than improvement in a person. He's an excellent engineer. He's an excellent officer as well. But together with that, he had a dream and he fulfilled a dream. And ONGC helped him fulfill that dream because climbing for Everest costs a lot of money. And not many people have that kind of money, but the organization is so great that we financed everything for these mountaineers and he climbed. Now, there was the first girl to climb Mount Everest, Kanchenjunga, is Monty Rajkhova, who is also an ONGC employee. She could not climb Everest in the first go, but she climbed Kanchenjunga. And then another 18, 19-year-old girl, Sheetal, she climbed Kanchenjunga. So, you see people grow, you see people conquer their weaknesses, you see people achieving milestones one after the other, physical fitness or breaking the mental barriers. And I think that's the biggest thing that a human being can do. So people improve. And I'm sure that would improve with improved employees. Would also reflect on the productivity of the employee of these people when they're working back in the company. If you feel tired after 8 hours of work, you can now possibly work for 12 hours and still not feel tired. Wonderful to hear that. Great, that's great. So, Devendraji, I want to ask this question. 17 years of experience into sports and getting children drug addicted. According to you, what is the impact that you've brought, and how is it helpful not just for slum dwellers, for anybody? People send their kids to rehabilitation centers and everywhere. What ideas do you want to share, and what impact do you want to share? How can people divert their children, their family members into sports to divert them from any sort of addiction, including substance abuse? तने क्या होता है कि ये प्लान नहीं किया जाता, इसलिए मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि प्लान नहीं किया जाता क्योंकि जहाँ हम लोग काम करते हैं स्लम्स में, वहां पर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल रैकेट्स चलते हैं जो कि 12 साल के बच्चे को टारगेट करते हैं और 12 साल के बच्चे को वो थिनर देते हैं, स्पास्मोप्रोक्सियोन देते हैं और छोटे छोटे ऐसे नशे का सेवन करना शुरू कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि उसको इजीली आदत पड़ जाए। फिर उस बच्चे को
से जब उसको आदत पड़ जाती है तो उससे पैसे मांगते हैं, जब उस पर पैसे नहीं होते तो उसे छोटे मोटे क्राइम में लगा देते हैं, जैसे किसी से पैसे छीन लेना, पिक पॉकेटिंग कर लेना। जब वो बच्चा 13-14 साल का हो जाता है तो उसे ब्लेड भी हाथ में थमा दिया कि इसके जाके ब्लेड मार दे, पैसे छीन ले। आजकल तो नौबत ये आ गई है कि 14 साल का बच्चा कट्टा लेकर के, रिवॉल्वर लेकर के किसी पे भी गोली चला देता है और ब्लेड मार देता है। और ये एनसीआरबी का डेटा है और दिल्ली पुलिस इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित भी है। तो ये सब लोग तो हम देख ही रहे हैं कि जुवेनाइल क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। तो हमने उसी को लेकर के प्रोग्राम शुरू किया था, जुवेनाइल ओरिएंटेशन थ्रू स्पोर्ट्स एंड हेल्थ। तो दैट्स व्हाई इट इज जोश, हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा बड़ी सफलता मिली। 2007 में हमने इसको शुरू किया था, बिफोर इंसेप्शन ऑफ लाडली। इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं खुद पिटाई खा चुका था ऐसे लड़कों से जो नशा करते थे और मैं खुद एक विक्टिम रहा हूं। तो वहां से मुझे इसका इंस्पिरेशन मिला कि इन लड़कों को मोटिवेट करना चाहिए, इन लड़कों को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हमने उस वक्त शुरू किया था, लेकिन ये फॉर्मुलेशन में आया 2007 में और हम लोग इसको तब से कंटिन्यू करते रहे। लेकिन कुछ दिनों पहले अभी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के हमने 3000 लड़कों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत बड़े लेवल पे किया था। 2018 में हमने शुरू किया था। एंड मनोज सर, देवेश श्रीवास्तव साहब जो थे वो नोडल ऑफिसर रहे इस प्रोग्राम के, और मिस मैरी कॉम जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था इस प्रोग्राम में। हमने 3000 लड़कों पर इसको एक्सपेरिमेंट किया। 3000 लड़कों को डार्क आवर्स में सिर्फ हमने कबड्डी खिलाई। हम शाम को जो 12 से 16 साल के जो बच्चे होते थे, जो नशा करने वाले बच्चे थे, हमने बीट ऑफिसर्स जो होते हैं दिल्ली पुलिस के, हर थाने में 55 लड़कों को हमने इनरोल किया। 7 लड़के एक टीम में, 4 लड़के रिजर्व। तो 11 लड़कों की टीम बनाई, क्योंकि 7 लड़कों की कबड्डी की टीम होती है, लेकिन 4 लड़के एक्स्ट्रा लेकर के हमने 5-5 टीमें एक-एक पुलिस स्टेशन में बनाई और उनको हम मैदान बनवाया करते थे, उनसे मैदान में पानी छिड़कवाया करते थे, उनको इंटेंसिव वर्कआउट कराया करते थे, कबड्डी खिलाया करते थे और उनको हम लालच क्या दिया करते थे कि एंड ऑफ द वीक आपका गेम होगा, उस गेम में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 100 रुपए मिलेंगे और डेली एक-एक केला मिलेगा और चने मिलेंगे। तो वो केला और चने का जो कॉम्बिनेशन था, जो लालच था उनको कि हमें स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा, हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। और अभी पीछे प्रो कबड्डी जिस तरीके से चला था, तो जैसे क्रिकेट का पैशन आया था, उस तरीके से स्लम के बच्चों में कबड्डी का पैशन आ गया था। तो हमको बहुत सारे बच्चों ने, जो नशा करने वाले बच्चे थे, उन्होंने कबड्डी में ज्वाइन किया। एंड जो सबसे बड़ा रिजल्ट हमारे लिए रहा वो ये कि मोर देन 1800 बॉयज ने बिना किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर के, बिना किसी मेडिसिन के नशे को छोड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और देवेश श्रीवास्तव साहब का हमें बहुत ज्यादा इसमें ब्लेसिंग्स रही। उनमें से बहुत सारे बच्चे, और ये बहुत बड़ा गेम हुआ था दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में, जहां पर की करीब 7 से 8 हजार पब्लिक गैदरिंग थी और उसमें मैरी कॉम मैम भी थी, मनिका बत्रा भी थी और एक और स्पोर्ट्स पर्सन थी, दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लड़कों ने प्लेज किया था कि हम कभी नशा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इससे आगे निकल गए हैं और वो थ्रू कबड्डी ही पॉसिबल हो पाया था। और उसके बाद जो इनिशिएटिव इसमें कंटिन्यू दिल्ली पुलिस ने किया कि उनमें से मैक्सिमम लड़कों को युवा में एनरोल कराया। तो युवा इज अ प्रोजेक्ट जहां पर वो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कराते हैं और उनको 100% जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। तो हमने एक बच्चा जो कि नशा कर रहा था, जो कंट्री के लिए, उसकी फैमिली के लिए लायबिलिटी था, पहले तो उसको खेल खेल में नशा छुड़ाया, फिर उसको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करा दी दिल्ली पुलिस ने और उसको बाद में किसी कंपनी में जॉब भी लगवा दी। तो एक बंदा जो लायबिलिटी था उसको कंट्री के लिए एसेट में कन्वर्ट कर दिया। तो वो तभी हो पाया अगर हम उस बच्चे को सीधा बोलते कि तू स्पोर्ट्स को छोड़ करके तू स्किल ट्रेनिंग में आ जा, तो वो नहीं आता था। तो स्पोर्ट्स जो है एक पैशन क्रिएट करता है कि, और वो पैशन वहीं आता है जहां पर उसकी जिद बसती है, उसको जुनून होता है। तो वो जुनून, जिन लोगों का क्रिकेट में जुनून है वो क्रिकेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जिन लोगों का जुनून डांस में है वो डांस में कुछ भी करने को तैयार हैं। तो खेल एक ऐसी चीज है कि अगर उसको बच्चों में, खासकर जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में जो बच्चे हैं 12-13 साल के, जो नुक्कड़ों पे खड़े रहते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई प्रोग्राम बनाएं, कई अब निक्सन सर एसबीआई हेड करते हैं, एसबीआई फाउंडेशन को हेड करते हैं, तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं अगर हम लेकर के आएंगे, अभी हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के साथ मिलकर के कर रहे हैं, दिल्ली में हम लोग 5000 बच्चों पे दोबारा उस प्रोग्राम को रेप्लिकेट कर रहे हैं और 6 महीने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और इस बार का टारगेट हमारा 5000 बच्चों का है। तो हम ये देखेंगे कि जो खासकर ऐसी ऑडियंस जिसको कि आप किसी भी लालच से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उनको बोलोगे स्कूल चले जाओ, वो नहीं जाएंगे। आप उनको बोलोगे कि तुम स्किल ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, वो नहीं आएंगे। लेकिन आप जैसे ही उनको बोलोगे कि चल हम क्रिकेट खेलने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तो फटाक से आ जाएंगे। आप बोलोगे कबड्डी खेलने के, फटाक से वो आ जाएंगे। एक बार वो आपके पास आ जाएं,
द मेन कंसर्न कि वो आ जाएं कैसे भी करके, और जब वो आपके पास आ जाएं, अगर आपने उनको 15 दिन भी रिटेन कर लिया, 15 दिन भी स्पोर्ट्स में एंगेज कर लिया, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपने उनकी जिंदगी बदलने का जो बीड़ा उठाया है वो बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग। तो दिस इज द थिंग दैट जो हम लोग कर पाए, और मैं चाहता हूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे आप लोग कैटफिट में स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, तो इन सारी चीजों को हम उस सोसाइटी के लिए भी उनके दरवाजे खोलें जो अभी तक इनसे बहुत ज्यादा दूर हैं। और कबड्डी हमने इसलिए चुना क्योंकि इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको। हम अगर किसी दूसरे स्पोर्ट्स में जाते तो हमें बैट चाहिए, बल्ला चाहिए, बड़ा मैदान चाहिए। ये हम किसी भी नुक्कड़ पे लोकल पार्क में हम वहां पर उसको गीला करते हैं, मिट्टी को चूना डालते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, कंकड़ पत्थर छानते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो दिस काइंड, और स्पोर्ट्स होता है वो कोई सा भी हो। So these are the things that successfully we have implemented at large scale. That's amazing. I think somewhere or the other, I believe. Yes, sir. बहुत अच्छा उदाहरण दिया देवेंद्र जी ने कि कैसे एक बच्चे को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम। And sir, I believe ये कहीं ना कहीं जो क्राइम है उसको भी कम करेगा, because जब डाइवर्ट हो जाएंगे, एक अच्छी जगह एनरोल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली क्राइम भी कम हो जाएगा। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट, अर्पण? कौन, मैं या कोई और? Arpan, can you hear me? Yes, I was. Yeah, I can hear you. Yes, I must first congratulate you, Devendra ji, for doing some terrific work at the grassroots. It's wonderful to hear these stories and success stories coming out of real areas, because I have always believed that young raw talent can only be identified in the most remotest of places. You can give the best of training to somebody, and if the person is not motivated, they will not make use of it. Coming back to our questions, I would like to throw it to all three panelists that we have. What happens to the youth who refrain from playing sports, one, and how is their life impacted at a later date in terms of their health? If we could start with you, Nixon sir, then followed by Manoj ji, and then Devendra ji. The youth should not refrain from sports, mainly because sports is promoting lot of good qualities, good traits in you. So those who are refraining from sports are not able to take the benefit of sports. I told you earlier that sports makes you fit. It gives you a good mental, emotional health, apart from physical health. So if you are refraining from sports, you are not going to have a good physical, mental, emotional health in the long run. That is a very, very certain thing. And therefore, those who are refraining from sports should take to some kind of sports activity at the earliest opportunity, I will tell you. And that is possible also, because if you are taking to sports activities, you will get away from whatever kinds of habits, if you are having like drugs or any such habits, if we are having, that also will be taken away if you are focusing on sports, because the enjoyment you get, happiness you get from sports will sustain you throughout and refrain from taking into all these drugs or any intoxication activities and all. So sports is some activity which we have to aggressively promote among the youth. See, great Manoj sir. There are no hard and fast rules according to me, because there are a whole lot of people who are into fine arts, into painting, into singing or acting or whatever. So there are, in the world, you have hundreds of fields available: photography, whatever. So those people may not necessarily be into active sports because they have some other passion to follow. My only take is that even if you are not into competitive sports or something like that, just set apart half an hour to 45 minutes. If you can't do anything, just
40 minutes, 45 minutes of brisk walk is enough to keep you fit. Because I've found that many people who joined with me have put on weight. They have issues with they have diabetes, problems with diabetes. They have heart problem and issues like that because they did not actively take part in at least some kind of a physical activity. So I'll not say sports, but I'll say that if you can do some active sports or competitive sports or anything which is engaging, badminton, whatever, is fantastic. If you can't, then at least do 40-45 minutes of brisk walk. That is good enough to keep you in good shape. And then you will yourself feel like adding something more to it, like yoga or some other sports. You yourself would like to add on to it, and you feel better about it. So that's my take. That have some kind of activity which makes you sweat for 40-45 minutes every day. Great. So Devendra ji, what's your take on it? हाँ, मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया. किसी भी बच्चे की जिंदगी में जब से शायद किसी की भी जर्नी शुरू होती है, मैं 6 साल ऑनवर्ड ही मानूंगा कि कोई भी बच्चा प्ले करना शुरू करता है, तो जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो स्पोर्ट्स जो है आपको फिजिकल डेवलपमेंट देता है, मेंटल डेवलपमेंट देता है. निक्सन सर ने बताया और ये बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली वो एक सोशल डेवलपमेंट देता है. किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में स्पोर्ट्स जैसे ही आता है वहां पर वो टीम फॉर्मेशन में आता है, वहां पर वो लोगों को देखना शुरू करता है कि कोई मेहनत कैसे कर रहा है, वहां पर वो डिसिप्लिन को सीखता है, वहां पर वो यूनाइट होना सीखता है. सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर एक टैलेंट उभरता है, एक टैलेंट मैं कहता हूं कि टैलेंट पैदा होना शुरू होता है जिसकी की डेवलपमेंट शुरू होती है, और वो उसके लिए एक गुण होता है, एक एडिशनल क्वालिटी होती है. पढ़ाई एक अलग चीज है, घर में लोगों का आदर करना अलग चीज है, बाकी करियर की चीजें अलग हैं, लेकिन स्पोर्ट्स का जो टैलेंट होता है वो क्योंकि मनोज सर ने पिछले बार भी 2 संस्कृत में श्लोक कहे थे, तो आज मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूंगा, आज ही कहा था, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन. तो जिस तरीके से गुणों से भरा हुआ जो आदमी होता है और फलों से लदा हुआ पेड़ होता है वो झुके रहते हैं, लेकिन सूखा वृक्ष और मूर्ख आदमी कभी नहीं झुकते. तो स्पोर्ट्स जो है वो मूर्खता से दूर रखता है. स्पोर्ट्स जो है वो व्यक्ति के अंदर गुण देता है, उसके अंदर हम्बलनेस देता है, उसके अंदर टीम स्पिरिट देता है, उसके अंदर डिसिप्लिन देता है. और जो भी व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन होगा, आप देखिएगा वो लोगों का दिल भी जीतेगा, और वो अपने किसी भी प्रोफेशन में जहां भी वहां रहेगा वहां डेडिकेशन से ज्यादा काम करेगा. और सोसाइटी का वेलफेयर तो मैं हमेशा इसलिए कहता रहता हूं क्योंकि मैं आज जो भी हूं उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इन्हीं सब चीजों का है. तो उस पर ना जाने की बजाय, लेकिन स्पोर्ट्स किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में वो संभावनाएं पैदा कर सकता है जो शायद से कोई और चीज ना कर पाए. Great. So my last question is for all of you. How does change in activities in youth has also affected? Am I audible? Yes, you are. हिंदी में भी बोल लेना. Okay. So जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, the activities are changing every day, like I discussed earlier. कि पहले तो हम पकड़न पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा, मनोज सर ये मेरे टाइम की गेम्स है, गिल्ली डंडा नहीं खेल पाए हम. तो ऐसे गेम्स हम लोग खेलते थे बाहर, एंड एक पूरा ग्रुप होता था, पूरी कॉलोनी इकट्ठे गार्डन में खेल रही है, और चिप्स ले रहे हैं तो सब शेयर कर रहे हैं, चॉकलेट शेयर कर रहे हैं. अब सब लोग घर पे रिस्ट्रिक्टेड रह गए हैं. मोबाइल पे गेम्स, पबजी सबसे पॉपुलर है, एंड आई थिंक एवरी मदर इज बस उनको है कि मेरा बच्चा पबजी बंद कर दे. तो इससे जो हमारा एक बॉन्ड है, एक फिजिकल रिलेशनशिप, एक आपको जैसे फेलियर की बात हमने करी थी, तो ये जो सारी फीलिंग्स और इमोशंस है ये कैसे डिक्लाइन कर रही है सबकी लाइफ में. द गेमिंग जोन इज नॉट गिविंग यू एवरीथिंग दैट एन एक्चुअल गेम वाज गिविंग यू. सो व्हाट इज योर से ऑन इट, मनोज सर? अब ऐसा है कि दुनिया बदल रही है, लोग वीडियो गेम भी खेल रहे हैं. मेरे दोनों बेटे वीडियो गेम बनाते हैं, तो वो ऑनलाइन गेम बनाते हैं. अब आप ये देखो कि इस कोविड के टाइम में 2 ही इंडस्ट्री बढ़ी हैं, या तो नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म मिलियंस ऑफ व्यूअर्स उनके हो गए, या गेमिंग इंडस्ट्री. तो हर एक का अपना अपना प्लस और माइनस पॉइंट होता है. हाँ, यह है कि कोई भी चीज आप करो तो एडिक्शन की लेवल तक नहीं जानी चाहिए. अभी परसों मैंने एक पिक्चर देखी नेटफ्लिक्स पे, सोशल डिलेमा.
उसमें वो ये बताते हैं कि फेसबुक और गूगल और ये सब जितने कंपनीज हैं ये कैसे आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर लेती है। तो आपको ऐसे जैसे आपने किसी को लाइक किया या कोई आपने पोस्ट डाली, उसको स्टडी करके कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर आपको इतना एडिक्ट बना देंगे कि आप अपने मोबाइल फोन से दूरी नहीं रह सकते हो। तो आप प्रोडक्ट बन गए हो। ये बड़े चिंता का विषय है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज आप करो, चाहे वो, अब आप देखो ना, क्रिकेट भी खेल रहे हो आप, तो अगर 10-10 घंटे खेल रहे हो तो फिर माँ बाप परेशान होंगे या आप अपना पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज एक लेवल तक ही अच्छी रहती है, जब तक कि आपका वो प्रोफेशन ना हो। आप हेल्दी तरह से किसी भी चीज को करें, कंप्यूटर गेम भी आप खेलें तो आधा घंटा पौन घंटा खेलें, किसी चीज को लिमिट में रख के और रिस्पॉन्सिबली खेलें तो कोई भी चीज खराब नहीं है मेरे ख्याल से। हर चीज का Manoj sir, अपना स्कोप है। I want to add on to what you just said. It reminds me of an incident. So अभी lockdown के time की बात है. I was staying at my daddy's place and I was discussing about a lipstick brand with my cousin. और हम बस एक रूम में बात कर रहे हैं दोनों, और फोन पड़ा हुआ है. हमने फोन यूज ही नहीं करा, वो अलग से पड़ा हुआ है. थोड़ी देर बाद जब उसने फोन स्क्रॉल करा तो उसको लिपस्टिक ब्रांड की एड आने लग गई. हाउ दे कैन रीड इट एंड हाउ दे कैन, वो देखकर तो फिर ऑब्वियसली आपको होता है ठीक है सर्च करें एंड देन बाय करें उसको. So yeah, technology is playing a very important role, and everything has its pros and cons. Nixon sir, what's your say on it? See, mobile games, video games, all these also give us a happiness, some pleasure and all. So there is nothing wrong in playing in mobile or video games and all. Only we should, at the same time, we should also give some, like we should find some opportunity to do some physical activity. Only that I want to tell, because if we fully get engrossed or obsessed with the video games or mobile games, it is harmful to the body and to the mind. Therefore, at the same time, we should find some time for physical activities. Like in this lockdown period, many people were not able to do physical activities because you are locked down in the house. But then many of the people are now come with the virtual run. You can do running like inside your apartment or wherever you want, indoors you can do. Even I have done it because I thought we shouldn't get disillusioned when some crisis or there is some uncertainty. We should accept that and respond positively. So when there is no opportunity for running outside, I thought why not I do it inside my apartment. So I completed 42 kilometers jogging inside my apartment, not once but 4 times. Just to give the message that if there is a will, there is an inspiring way to achieve it. And therefore, I will tell that along with video games or mobile or internet, everything, we should also find time for physical activity and improve our physical literacy. On that note, Very well said, we are very well. Yes, we are out of time, but last but not the least, I would like to thank all the 3 guests. Devendraji, it was quite enlightening listening to you and how you've transformed the lives at the grassroots levels, right from slum areas and others. And the tremendous job that you're doing, especially through sports for slum children, was fantastic to listen into. We would love to be a part of it and help you out in whatever way we can, and with time and effort and whatever else is required. Manoj sir, it was again very enlightening listening to you. I remember the first time that you came here, you started off with "Kya main Hindi mein baat kar sakta hu?" That was, of course, Hindi Divas tha us din. So I remember that. Terrific to listen into that. Thank you again for enlightening us how people who couldn't even run or walk 500 meters properly can go on with sheer willpower to climb Mount Everest, and how their productivity has increased in the corporate sector. So this is all thanks to sports. Last but not the least, Nixon sir, fantastic, terrific job with 42 marathons. I mean, you've inspired even me. I've been preparing for Ironman for quite a few years, not managed to get there, but probably I'm going to, pull up my socks and do something about it from here onwards. Thank you once again, ladies and gentlemen, for tuning in to a wonderful webinar with 3 of excellent panelists. We hope to have them once again in the future and listen to their enlightening views about some other subject. Thank you once again, gentlemen. Have a great evening ahead. Thank you.